Hello everyone, welcome to RV Laws. In today's video, I am going to discuss the overview of Indian Evidence Act 1872. I humbly request you to watch the video till the end. The enactment and the adoption of Indian Evidence Act brought an uniformity in the Indian legal system with respect to admissibility of the evidence. एविडेंस एक्ट के आने से पहले इंडिया में जो रूल्स ऑफ एविडेंस थे दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटी एंड रिलीजियस सेक्ट्स. ऑल्सो जो रूल्स ऑफ एविडेंस थे वो डिफर करते थे पर्सन टू पर्सन. आई मीन द रूल्स ऑफ एविडेंस वाज यूज टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट, कम्युनिटी, faith and the religion of India. The Indian Evidence Act governs the admissibility of the evidence in Indian courts. जो Indian Evidence Act है ये basically rules of evidence को govern करता है with respect to admissibility of evidence. कौन सा evidence admissible होगा कोर्ट में and कौन सा evidence admissible नहीं होगा. The father of Indian Evidence Act is known as Sir James Fitzjames Stephen. The Indian Evidence Act is a complete and comprehensive code. जो Indian Evidence Act है ये एक complete and comprehensive code है and it provides all the procedures and the types of evidences which are admissible in the court. Basically जो Evidence Act है ये एक अपने आप में exhaustive code है. The Indian Evidence Act basically consists of 3 parts with 11 chapters and 167 sections. बेसिकली जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें टोटल 167 सेक्शंस है विथ 11 चैप्टर्स. इफ वी रीड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दैट सेज दैट whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence. So the preamble का सिंपल मीनिंग है कि जो कोड है ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट कोड एज इट यूजेस द वर्ड to consolidate, define and amend, and that is why the Indian Evidence Act is called an exhaustive. As we are talking about the Indian Evidence Act, so we need to understand what is evidence and how it has been defined under the Indian Evidence Act. चलिए समझते हैं. So the definition of evidence has been provided under section 3 of the Indian Evidence Act, which is a interpretation clause. Let's understand the definition. Evidence. Evidence means and includes clause 1 all the statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. Clause 2 all the documents including electronic records produced for the inception of the court. Such documents are called documentary evidence. So the definition of evidence given under section 3 seems to be exhaustive definition as it uses the word means and includes. These both words in combined indicates that the definition of evidence is a exhaustive definition. After reading the definition of evidence, we find that जो definition of evidence है वो बात करता है oral evidence and the second one is documentary evidence. Oral evidence means the statement of witnesses. जो गवाह जो होता है वो कोर्ट में जो statements देता है that is called oral evidence. But the condition for oral evidence is that it must be a direct evidence. Like it should not be a hearsay. ऐसा नहीं कि आपने किसी और से सुनी हुई बातों के बिहाफ पे आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते. ऑल्दो द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इट सीम्स टू बी एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, बट जो एविडेंस का डेफिनेशन है वो केवल ये बोलता है कि एविडेंस का मतलब क्या होगा और क्या इंक्लूड करेगा. द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस डज नॉट डिफाइन द टर्म एविडेंस, इट ओनली डिफाइंस व्हाट एविडेंस वुड मीन और इंक्लूड. अगर हम एविडेंस को एज अ लेमैन टर्म में समझें तो एविडेंस का मतलब होगा एनीथिंग विच विल हेल्प टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल फैक्ट और
द इश्यूज इन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। एज अ लॉ स्टूडेंट आप सभी ने सुना होगा ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो वो सारे रिलेवेंट फैक्ट जो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कनेक्ट करती हो एंड कोर्ट को हेल्प करती हो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रूव करने में, दैट कैन बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। एंड हम लोगों ने देखा कि डेफिनेशन में दो टाइप के एविडेंस की बात की गई है, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी डिवाइडेड है, फर्स्ट प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। नाउ प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लाइक इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, बट कहीं पे वो एग्रीमेंट खो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो जो सर्टिफाइड कॉपीज होगी वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस काम करेगी। एंड हमने सेक्शन 3 में जो एविडेंस का डेफिनेशन है उसमें देखा कि जो ओरल एविडेंस की बात होती है तो ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एंड सेक्शन 62 टॉक्स अबाउट प्राइमरी एविडेंस। एंड प्राइमरी एविडेंस का मतलब होगा जो डॉक्यूमेंट होगा उसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया हो। एंड जो सेकेंडरी एविडेंस है वो दिया गया है सेक्शन 63 में। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 द सेकेंडरी एविडेंस वुड मीन द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। एंड सेक्शन 63 is basically a exhaustive definition for secondary evidence. There is another form of evidence which is digital evidence, that is called electronic records, as provided under section 65A. Section 65A basically permits that the electronic evidence may be proved. Section 65A and section 65B, which talks about the admissibility of electronic records. It was basically inserted through the Amendment Act in 2000 when the Information Technology Act came into enforce. Basically जो provisions है electronic records के लिए and the evidence with respect to electronic records ये पहले नहीं था. Initially it was not there in Evidence Act, but ये insert किया गया through the Amendment Act 2000. There is one more important thing to know that जो evidences होते हैं वो हमेशा direct evidence होनी चाहिए, right? But there are many circumstances जब कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, उन केसेस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस को हम एज अ प्रूफ यूज करते हैं। बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस मे बी कंसिडर्ड व्हेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस indicates that all the relevant circumstances indicates that the accused had committed that crime, and that should be beyond reasonable doubt. And the hypothesis of circumstantial evidence should be that the accused had committed a crime. सेकेंड हाइपोथेसिस नहीं आनी चाहिए। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस से कोई सेकेंड हाइपोथेसिस निकल के आ रहा है कि अक्यूज ने क्राइम नहीं किया होगा या फिर किया होगा, उन केसेस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एज ए प्रूफ नहीं लिया जाएगा। बट जब सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड ऑल द रेलेवेंट प्रूफ indicates that the accused had committed crime and no other hypothesis can be drawn out of that circumstantial evidence, then only the circumstantial evidence can be admitted. चलिए अब समझते हैं extent, commencement and the application of Indian Evidence Act. If we read section 1 of Indian Evidence Act, we would find that it extends to whole of India except Jammu and Kashmir. But as you all know that the Evidence Act will also be applicable to Jammu and Kashmir after the revocation of the special status given to the Jammu and Kashmir under Article 370 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. So basically Evidence Act अब whole of India में applicable है, even Jammu and Kashmir में भी। चलिए एक बार Section 1 को पढ़ के देखते हैं। Section 1 Short Title, Extent and Commencement. This act may be called the Indian Evidence Act 1872. It extends to the whole of India except Jammu and Kashmir and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court-martials, other than court-martials convened under Army Act, the Naval Discipline Act, the Indian Navy Discipline Act, the Air Force Act, but not to affidavits presented in the court or officer, nor to proceedings before an arbitrator, and it shall come into force on the first day of September 1872. So अगर हम सेक्शन 1 को
एज अ लेमैन समझे तो इसका मतलब ये है कि जो एविडेंस एक्ट है अब होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा, राइट। एंड ये सभी प्रकार के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा, इवन दो कोर्ट मार्शियल्स में भी। बट उन कोर्ट मार्शियल्स में नहीं अप्लाई होगा जो कि आर्मी एक्ट के अंदर आते हो, एयरफोर्स के एक्ट के अंदर आते हो, इंडियन नेवी एक्ट के अंदर आते हो। मतलब ये कि जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है उनके एक पर्सनल प्रोसीडिंग्स होते हैं और उनके लिए एक अलग से ट्रायल चलती है एक अलग स्पेशल कोर्ट्स में, राइट। उनमें एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है, बट मार्शियल्स कोर्ट में अप्लाई होगा जो इन एक्ट से कवर नहीं होते हो, लाइक आर्मीज एक्ट से कवर नहीं हो रहे हो, वो नेवी डिसिप्लिन एक्ट से कवर नहीं हो रहे हो, वो एयरफोर्स एक्ट से कवर नहीं हो रहे हो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी अप्लाई नहीं होता है। एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होते हैं दे आर ओनली बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बट नॉट टू द रूल ऑफ एविडेंस एज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑल्सो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एफिडेविट्स को एज एविडेंस नहीं मानती। इट डज नॉट अप्लाइज टू द एफिडेविट्स प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एफिडेविट्स जो है वो पूरी तरह एज एविडेंस रूल आउट हो जाती है, नहीं। जो एफिडेविट्स है उन्हें एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पे लिया जाता है, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ऑल्दो द एफिडेविट्स आर नॉट द पीस ऑफ एविडेंस, बट if the law specially permits that it should be considered as evidence, then in such case it can be. I will make a special video on the evidentiary value of affidavits in the next video. Thanks for watching RV Laws. Please like, share and subscribe.